Hello everyone, in this video we will be starting new chapter of engineering maths. The name is Laplace transform. Very important chapter. It has a weightage of 8 to 9 marks almost throughout all the universities. काफ़ी important chapter है and this is quite easy also compared to other chapters. In this chapter we will be learning different topics, small topics. सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है उसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं. देन हाउ टू फाइंड लैप्लास ऑफ एलिमेंट्री, सम फ्यू एलिमेंट्री फंक्शंस. प्रॉपर्टीज़ क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की. देन हाउ वी यूज़ इट फॉर डिफरेंट फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, देन मॉड्यूलस फंक्शन. Then we will be learning about what is the shifting property of Laplace transform, then inverse shifting property, then inverse property of Laplace transform, and then finally application to differential equation. ये बहुत ही important है, application to differential equation. So this is how the different chapters are listed in the whole chapter. So now we will be one by one, we will be going through all the topics. Easy है काफ़ी समझने के लिए and to solve the question also it's quite easy if you understand it very well. So let's start with it. सबसे पहले देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब रियल लाइफ में हम यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कहाँ यूज़ करते हैं. इसके पहले हमने देखा था एक चैप्टर फोरियर सीरीज़ था, दिस वन एंड लैप्लास थोड़ा सिमिलर, इट्स नॉट सिमिलर मतलब फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. आपको याद होगा फोरियर सीरीज़ हम यूज़ करते थे जहाँ पे हमें साइनोसॉइडल या तो पीरियोडिक फंक्शन जब भी आता था, दैट टाइम वी यूज़ टू यूज़ फोरियर सीरीज़ टू रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ सिग्नल और द फंक्शन. So now in the Laplace, where Laplace we can use it when the function is in the exponential form, exponential function, that time we use Laplace transform. What is meant by exponential? That is one more thing. Exponential means over the period of time that function is decreasing. हमने ये स्कूल में भी कुछ questions न्यूमेरिकल्स मैथ्स में किए थे, like one machine is decaying over the period of time because of some environmental factors or some other things, or by use, because of use. So and we have to find how much that decay had happened, or some growth of bacteria is decreasing for over the period of time. So those kind of examples is nothing but the exponential functions or exponential decay, we can say that. So those functions is nothing but exponential function. In those cases we can use the Laplace transform. This kind of functions. Now the second question comes, where we come across this kind of function, exponential functions. So what I would say here, the very widely where we will come across this kind of function is in nuclear physics, where we use radioactive elements for generating the nuclear energy or nuclear power, we can say that. That time we use some radioactive elements, or we can call it them as isotopes also. So if you want to know how much radioactive elements are remained in that particular isotope after some certain time, over the period of time, so those cases those exponential functions gets used, because we use these functions how we represent that, like how many number of elements or the atoms are left in the isotope which are active. So that's how we can find it. So this can be represented by one linear function which is like a dn upon dt, which is equal to minus lambda n, where this n is nothing but the number of active atoms which are left in that particular isotope, and lambda is nothing but it's a decay constant which we taken. Since this function is like a decaying, that's why it is minus sign is there. So this is how to represent this exponential functions or
to get the value of these functions, we use the Laplace transform. So it's very widely gets used in nuclear physics and some of the other areas also where we are using the functions in exponential format. So this is one of the application of Laplace transform. And one more very important application which we will be learning in this chapter is it's useful to solve linear differential equations. Linear differential equation हमने पहले भी पढ़ा है. The equations where you will be having some differential मतलब differentiation के term मतलब d square y by dx square or d cube y by dx cube, that kind of terms will be involved in it. तो जब भी हमें इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं तब ज़्यादा थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है. Then if you apply Laplace transform to these differential equations, then it gets converted into algebraic expressions, algebraic equations, so which are comparatively quite easy to solve it. तो ये Laplace transform उस differential equation को थोड़ा easy बनाता है, so ताकि हमें solve करने में it should be quite easy. So काफ़ी important application है Laplace transform का in the field of physics as well as in maths. So let's start with going through the first chapter of Laplace transform. सबसे पहले इसकी definition देखते हैं. Laplace transform of f of t. f of t is nothing but the given function. इसको denote करेंगे Laplace of f of t को square bracket में रख देंगे उसको. This is equal to nothing but 0 to infinity e raised to minus st f of t dt, which is equal to f of s. तो यहाँ पे हमने बहुत सारी various terms, not terms but means different letters we have used it. तो वो क्या है सबसे पहले जान लेते हैं. L is stands for Laplace transform operator. Then f of t, capital F of t जो है हमने use किया है for the given function which will be in the terms of t. Then f of s जो small f of s है, ये जो after taking the Laplace transform of function, whatever we are getting in terms of the s, that is nothing but the new function which we have received after taking Laplace, उसके लिए हम denote करेंगे small f of s. और जो s is nothing but the parameter which is a real or complex number. So this is definition. काफ़ी आसान है अगर आपको याद रखना है इसको. जब भी हम किसी फंक्शन का अगर आपको Laplace लेना है, Laplace ट्रांसफॉर्म करना है, so what you will do it, you will just take integration from 0 to infinity and you will be multiplying with e raised to minus t. उस फंक्शन को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे and integrating will be with respect to dt. So this is how we will be writing. Just take integration 0 to infinity multiplied by e raised to minus st, integration will be with respect to dt. So उसको हम call करेंगे f of s, small f of s. That denotations is quite important also, which you have to keep it in mind. जिस functions का हमें Laplace लेना है वो हम capitals में denote करेंगे. And after taking a Laplace of those function, whatever we are getting the function, new functions in terms of s, उसके लिए हम small letters use करेंगे, लेकिन जैसे कि small f of s, small g of s and respectively. So notations को भी आपको अच्छी तरह से याद होना है. Now next thing is properties. Before going to properties, we will go for what will be the Laplace of certain elementary functions. मतलब ये list है जो हमें I think after practicing some questions, जैसे आप questions को थोड़ा practice करते जाओगे, solve करते जाओगे, वैसे आपको ये अच्छी तरह से याद धीरे धीरे रहेगा. जैसे कि हम differentiation करते हैं sin x का, integration करते हैं sin x का, हमें वो formula याद होते जाते हैं. उसी तरह कुछ इस प्रकार ये formula जो है basic formula है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे ये याद हो जाएंगे. सो नाउ फर्स्ट थिंग इज Laplace of 1 is 1 by s. Laplace of t to the power n. There are two formulas for this one. So when n is whenever n is a whole number like 0, 1, 2 जब भी आता है, then we will be using this formula n factorial upon s raised to n plus 1. लेकिन अगर n की वैल्यू माइनस है, फ्रैक्शनल है, जो भी है,
So that in those situation we will be using this one, gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1. तो ये फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला अप्लाई करना है डिपेंड करता है आपके ऊपर कि n की वैल्यू किस फॉर्म में दी हुई है, लेकिन दोनों भी आपको पता होने चाहिए. नाउ लैप्लास ऑफ e टू द पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a. साइन ए टी का फॉर्मूला होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. कॉस ए टी का s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. साइन हाइपरबोलिक ए टी का लैप्लास है a अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. कॉस हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मेट है s अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. काफ़ी ईजी है, इस फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूले. These are just basic questions to to understand how we apply the formula, just the formulas which we just saw in the previous slides. So Laplace of cos of 70, तो 7 मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू जो है a's value is 7 over here. So as per the formula, what formula says that s is s upon a square plus a square, right? So यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s अपॉन a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. a की जगह हम 7 लिख देंगे फॉर्मूला में, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द फाइनल आंसर. सिमिलरली यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एच टी, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला साइन एच ए टी इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ये फॉर्मूला था. हमें इन द क्वेश्चन व्हाट द वैल्यू ऑफ a हैज़ बीन गिवन इज a इज इक्वल टू 10. उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे 10 अपॉन a स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ चुका है. सो दिस इज हाउ इट्स अ सिंपल. लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियो.